हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में स्वागत है आपका पार्ट 12 में ऑफ टैट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हमने इससे पहले बहुत सारे स्टोरीज देखे हैं ऑफ मेनी पिक्चर्स व्हिच आई एम शोन टू यू फॉर टैट व्हिच इज अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन योर एसएसबी इंटरव्यू। आज के सेशन में भी हम कुछ ऐसे पिक्चर्स देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टोरीज देखेंगे, कुछ सैम्पल स्टोरीज, और फिर उन स्टोरीज को अगर आप लिखते हो तो किस तरह के आपके क्वालिटीज को इवेलुएट करेंगे साइकोलॉजिस्ट, ये भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पिक्चर के साथ आज के सेशन का। यहाँ आप सेशन को 30 सेकेंड्स के लिए पॉज कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं वट एवर यू कैन सी और ऑब्जर्व फ्रॉम द पिक्चर। नाउ लेट अस चेक आवर ऑब्जर्वेशंस। इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक आदमी, एक मैन इज स्टैंडिंग और दो औरत जो है टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ या आपस में बात कर रहे हैं। ओके, वन ऑफ देम इज बेसिकली अ बिट ओल्डर देन द अदर, या फिर आप दोनों का एक सेम ही ले सकते हो। ठीक है, तो देखते इस तरह की पिक्चर को लेके क्या स्टोरी बन सकता है। Ananya and Anjali are college batchmates studying in second year of engineering in Government Engineering College, Jagdalpur. Anjali has come to Ananya's place to discuss further plans for the internship program. Mr. Anant Verma, father of Ananya, works as an executive engineer in the National Mineral Development Corporation, and hence the duo had decided to take further guidance from Sir. Mr. Anant Verma joins the ladies for coffee and guides them on career pathing. Anjali and Ananya are inspired from the discussion and realize the potential of engineering being a game changer for tomorrow. They decided to go ahead with internship in NMDC, which is one of the most prestigious Navratna PSU of India. Also, they take the lead educating their other classmates and guided them on the application procedure. The head of the department of the respective branches applauded both Anjali and Ananya on their initiative. At the end of the internship, Anjali and Ananya were awarded on their exemplary dedication from NMTC supporting their internship campaign. तो बेसिकली एजुकेशन के बेसिस पे ये स्टोरी लिखा गया। अब देखते हैं ऐसे स्टोरी से किस तरह के इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करें तो पीएसयू में इंटर्नशिप लेना, इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस समझना, बाकियों को इन्फॉर्म करना इज ऑल बीन अ पार्ट ऑफ दिस क्वालिटी। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो जो लेडीज थे उन्होंने जो अनन्या का फादर था उनसे कंसल्ट किए, उनके एडवाइस लिए, उनका समझा जो भी उन्होंने बताना चाहते हैं वो, एंड देन दे डिसाइडेड टू टेक एन इंटर्नशिप। देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज इंटर्नशिप के थ्रू ये सब भी आपका ग्रो करता है। द वे दे वर कम्युनिकेटिंग, द वे दे वांटेड टू नो और दे वांटेड द गाइडेंस फ्रॉम मिस्टर आनंद वर्मा। सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों का ही देखने को मिल रहा है जिसके वजह से अवार्ड्स भी दिया जा रहा है। डिटर्मिनेशन इज देयर बिकॉज दे आर डिटरमाइंड टू अचीव द थिंग्स देमसेल्व्स एंड ऑल्सो दे आर हेल्पिंग अदर्स। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, द वे दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द करियर पाथिंग डिस्कशन एंड गाइडेंस टू अदर्स फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर। Initiative is taken because they initiated the guidance procedure to help others and to help them in the application procedure. Courage भी देखने को हमें मिल रहा है। Cooperation could be seen as they're cooperating with other people in this aspect as well. Sense of responsibility could be seen because they realize that it will be important for them to share the internship ideas or update with their batchmates. Stamina could be seen because in working as an intern needs a lot of stamina, both physical and mental, and they were awarded for last of all for that. Group influencing ability could be seen because the way they educate the fellow batchmates. Liveliness again could be seen because they are very enthusiastic about how to grow themselves, how to grow their own career. Social adaptability could be seen because they're helping others. That means they have good social adaptability with their peer group, right? अब हम देखेंगे सेकंड पिक्चर हमारे सेशन का। यहाँ पे भी आप सेशन को 30 सेकेंड्स के लिए पॉज कर सकते हैं एंड मेक ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस पिक्चर। नाउ लेट अस चेक आवर ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है आसपास दो पेड़ हमें देखने को मिल रहा है। वी कुड ऑल्सो सी अ वुमन इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड अदर इज स्टैंडिंग। जो बैठी है शी इज एन ओल्डर वुमन एंड शी इज प्रोबेबली क्राइंग एंड शी इज क्लैड इन बुरखा। The woman who is standing, she is a bit younger than the woman who is sitting on the ground, and she is also a bit maybe angry, maybe a bit sad because her eyes are closed or maybe they are downcast. ठीक है, and her back is towards the woman who is sitting on the ground. ठीक है, and she is also clad in burqa. So let us see किस तरह का story we can write from this picture. Smriti Deshpande is a second year BCA student of Sarabhai Raisoni Women's College, Nagpur. You can give any name of the college. You can also write a women's college.
She has been an active social activist and utilizes cultural programs as a means to spread awareness. Apart from her enthusiastic participation in various cultural activities and sports, the lady is an accomplished scholar awarded with various scholarships. Smriti put forward the idea of showcasing apathy towards strangers by means of a Nukkar Natak, which is a street play. In her opinion, this was a growing issue in the community where bystanders refused to offer help to any suffering stranger with the fear of legal formalities. The management and the cultural committee applauded and instructed Smriti to make a very proper arrangement. She took lead of the responsibilities, groomed the juniors, and made them perform an act where a lady has been robbed and the bystander is ignoring and walking away. This act earned the highest appreciation on the event day and earned media attention as the higher dignitaries and government officials appreciated the motive. It was a proud moment for the lady as well as for her college. Okay, so basically जो scene दिखाया गया है, the story is projecting it as a scene from a street play. ठीक है, देखते interpretations क्या क्या the psychologist can evaluate from this kind of story. Effective intelligence की बात करें तो ये जो message of awareness है उन्होंने spread करने का सोचा and how that is being projected here. Reasoning ability here because she is trying to reason with the other people about why she wanted to spread awareness and what is actually happening in the surroundings. Power of expression हमें देखने को मिल रहा है because staging a nukkar natak or giving the idea a shape of a play is itself need a lot of power of expression. So which is again seen, the acting itself is a power of expression. Self-confidence is seen because she decides to take this very unique concept in her display of the creativity and to showcase it in front of such high dignitaries. Determination is shown because she wants to be, she's very determined towards public service by means of showcasing awareness based messages and also practicing being a social activist. Organizing ability is seen because the way she organized the play. Initiative again is seen because she took the initiative of organizing the play. Courage is seen because in order to give a positive message through this elephant in the room concept needs a lot of courage and obviously in front of such high dignitaries. And cooperation is seen of course because उन्होंने juniors के साथ cooperate किए, उनको groom किया, नाटक प्ले जो है स्टेज किया उन्होंने. रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स द सिटीजन्स, अदर सिटीजन्स, टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी इन जनरल दैट कुड बी सीन. स्टैमिना भी हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज परफॉर्मेंस करने के लिए एक डायरेक्ट करने के लिए प्ले को बहुत दिनों का स्टैमिना लगता है, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, तो वो हमें लीड कैरेक्टर में देखने को मिल रहा है. ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी सीन बिकॉज the director or the lead character here is seen influencing and grooming other juniors here. Liveliness is again seen because again to act, for acting, to act in a play, etc., you need liveliness, otherwise it will not work out. Social adaptability again could be seen because this is how she projected her play and she groomed the junior, she made a team, she organized the play. So college के साथ भी एक अच्छा relation हमें देखने को मिल रहा है with the lead character. So she's not making herself proud only, she's also making her own college proud of her. Okay. तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोरीज हमने यहाँ पे दिखाया है ये सैम्पल स्टोरीज है, दीज आर नॉट आइडियल और परफेक्ट स्टोरीज. आप इस तरह के स्टोरीज लिख सकते हो जिस तरह इंटरप्रिटेशन मैंने दिखाया है, आप उस तरह खुद के स्टोरीज को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं ना. आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस पिक्चर फॉर 30 seconds, make the observations carefully and then write down a story based on this picture. For writing the story, you need to give yourself 4 minutes. And then you can share the story through the comment box below. I will see who has written the best story out of all of you. Now, if you want to prepare more for your upcoming SSB interview and psychological test like this, make sure you're joining our SSB interview online course and preparing for your upcoming SSB. You're preparing for any other written defense exam, do not worry. We have also provided courses for those exams as well. So check out our app today and subscribe to the courses that you want to enroll for. Use the code WARRIOR10 to get a 10% off on these courses. I'll see you next with TAT practice exercise part 13, where I'm going to bring more pictures and stories and interpretations for your understanding and more clarity. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.